So we will practice connectors, of course, some basic connectors for A2 or B1, means there are similar connectors, but उससे पहले आपको ये वर्ड्स आने जरूरी हैं, वोकैब भी इंप्रूव होगी. एक बार मैं वापस बताता हूं, वर्ड यूज करेंगे उन कनेक्टर्स के साथ में हम लोग. ऑब्जेक्ट लिस्ट मीन्स जानबूझकर, इंटेंशनली, आई डू इट intentionally, so that you learn this vocab also. There are some adjectives also here. Gesund, healthy. Froh, happy. Fröhlich, happy, in happy mood. Schädlich means injurious, नुकसान देता है जो. Thus is schädlich für die Gesundheit. It is dangerous for the health. Traurig, injurious, dangerous. Traurig is sad. He is sad. Beantragen means to apply for something, maybe for your account. You want to have an account in bank, or maybe passport, something like that. Beantragen, you apply. Ärgern, नाराज होना, angry. Schimpfen or beschimpfen means to abuse someone. Frieren, because of cold, maybe you freeze, you don't have enough or good clothes, warm clothes, and then you freeze. Frieren. Heiß is hot, warm, kalt, cold, you know. Schwimmen, you swim, you want to swim. Sich beeilen means to be in hurry, you don't have time, or maybe you got late. Rauchen, to smoke, you already know. Weinen is to cry, rona, dukhi ho upside. Arbeiten, to work. Verdienen is to earn. Wir verdienen Freunde, wir verdienen Geld, to earn. Treiben is to do, but it is used for sport. Wir treiben Sport bedeutet means we do sport activities. Sport treiben, Sport machen. Zahnschmerzen, teeth hack, दांत में दर्द है. Konto is account. Spaß is fun. Berg means mountain, but Gebirge means mountain series, Himalayas or Arauli Parvat or Glut means smooth, chikna, maybe without hair you are glut, or maybe some road, it is also sometimes glut. Samtan, flat. Urlaub, holiday. Dunkel is dark. Schwitzen, you sweat, maybe because of it is too hot outside. Es ist zu heiß draußen. Rutschen or ausrutschen, you slip. You slip. Okay, these are the words. Now I will ask, you have to reply, and then we will play with some connectors. Okay. Juno, joy. What is schädlich? What is schädlich? Hers, you can also reply. Schädlich. Schädlich are dangerous. Injurious. Injurious, na? Dangerous. Okay. So for health, injurious, you say, yeah, it's dangerous, not good for health. Arjita, what is frieren? Frieren. To freeze. To freeze. Yes. Yeah. Sardar, what is schwitzen? Yes. Rohit, treiben. Treiben. To do, yes, for sport especially. Vishal, rauchen. Rauchen. Bunty, rauchen. To smoke. Vishal, weinen. To cry. Yes, to cry. Okay. So these are the words. Anybody can answer. Berg Mountain. and Gebirge. Mountain city.
mountain series. Okay. Absichtlich. Ich mache das absichtlich. जानबूझ के. Mayank, what is dunkel? Dark. Okay. Frieren. Beschimpfen. To abuse. Okay. Mayank, what is schwitzen? Yes. And Arjita, what is ausrutzen? Ausrutzen. To slip. Piselna. Okay. Maybe it is very smooth sometimes. Okay, good. Also jetzt können Sie diese Wörter. Words आपको आगे. Now I have something for you. Okay. Can you see the screen? Yeah. Okay. So we want to practice connectors. So here there are some sentences and here there are regions. Okay. So सब्जेक्ट, ये केवल सब्जेक्ट हो गया पहला, रिमेनिंग पार्ट प्रेडिकेट. खैर, लेकिन इधर कुछ सेंटेंसेस हैं एंड हियर देयर आर सम रीजन्स. सो सपोज इफ वी जस्ट मैच देम एज इट इज, देन दे डू नॉट मेक सेंस और द सिचुएशंस बिकम्स फनी. राइट. आप ऑफ करके रखो अपने बैकग्राउंड में, आपके हिप हॉप चल रहा है शायद, बोलना है तुरंत उसको ऑफ करना है वापस, है ना, लगातार उसको ऑन नहीं रखना. सपोज इफ आई से वी आर लाखन, वी लाफ, एंड रीजन बिकॉज इट इज okay, but suppose someone says we are lachen while as cultist, we laugh because it is cold, so it is funny. Does not make any sense, na? So there is some proper reason given here. So what you said, we are lachen while we are, yeah, while we are fröhlich sind, fröhlich, we are happy, and maybe that is a reason. Maybe we are happy and we laugh. Okay. Okay, maybe multiple suitable sentences, if you see multiple regions, that is also fine, no problem. So आपको लगता है कि you laugh because it's fun, yeah, maybe. So we will try to fix some reasons, we will try to find some interesting reasons. Okay, we are lachen while we are fröhlich sind, maybe we are happy. We are trinken while we are durstig means you are thirsty. Durstig, thirsty. Any word if you don't know, you can ask me. Yeah, these all the regions, you means all the words, verbs you know, no? Beeilen means you are in hurry. Schlafen, you sleep. We eat, we are essen. We are frieren. We are frieren. What may be the reason? We are frieren. Okay, maybe for first. Yep. And normal sentence होता है es ist kalt. Normal sentence is es ist kalt. Verb is on second position. No, in normal sentence. But now we are using while connector, so verb is coming at the end. Before while we will just put comma, right? So we are lachen and then there will be comma if you are matching. So again, we are schwitzen. Next one, we are schwitzen while as their warmest. While as their warmest. Okay, we are schwitzen while as
sehr warm ist. पसीना आ रहा है हमको क्योंकि it's too hot, it's too warm. Yeah, Juno Joy, wir essen. Juno Joy, wir essen. While we are hungry sind, because we are hungry, and this is the reason we eat. Mayank, we are frieren. We are frieren. हम धूज रहे हैं. We are frieren. Do you have any reason here? सर्दी लग रही है. While es kalt ist, because it is cold, that's why you freeze. We are frieren. Okay, dann Sardar, wir treiben Sport. We are treiben Sport. We do sports activities. While we are müde sind. Oh my God. Müde means you are already tired and then you. Yeah? No, it's not a proper reason. We are machen Sport. We are doing sport activities. Tired होंगे तो हमको sport अच्छा ही नहीं लगेगा. We would like to maybe sleep, na? Or rest at least. We are schlafen. Yes, While we are müde sind. This may be logical. While we are müde sind. Because we are tired. Müde. Müde sein. Yeah. Okay. So, who will give the reason? We are treiben Sport. Fine. Yes, this may be logical ना, because it's fun, because मजा आता है, इसलिए हम लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं मजे के लिए. अब कोई ये इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं. किसी को मजा आता है, कोई बोलेगा बिकॉज इट इज हेल्दी, कोई बोलेगा बिकॉज इट्स फन. It depends on us. Okay, yeah. Wir trinken. While we are durstig sind. Wir schwimmen. Wir schwimmen. While es sehr warm ist. Okay. While es ist Spaß macht. Maybe because it's fun. Any other reason? While es Spaß macht, while es, yeah, while wir fröhlich sind. Okay. Yeah, these are the reasons. Or maybe it is healthy, but it's not written here, na? While es gesund ist. Yeah, maybe you. While we are fit bleiben wollen. We want to be fit. Wir wollen fit bleiben. Normal sentence. And with while, verb will come at the end. So one by one. Wir gehen spazieren. The remaining one first. Wir gehen spazieren. Okay, while we are Urlaub haben. Maybe we have holidays. And now we have time. While we are Zeit haben. Zeit. While wir keine Zeit haben, because we don't have any time, then which one is suitable? While wir keine Zeit haben, because we don't have any time, then wir beeilen uns means we are in hurry. Why? You say hurry up. Why? Because you don't have time. While wir keine Zeit haben, while wir uns verspäten.
यस ओके मार्केट में कौन है भाई पीछे से आवाज आ रही है मार्केट में हो आप ओके वी आर लाखन वी आर बेआइलन वी आर श्लाफन what is the reason we are schlafen while we are muted sind oh maybe while we are traurig sind we are sad and then we sleep मेरे को तो नींद ही नहीं आए okay but while we are muted sind will be more appropriate okay we are essen we are frieren yeah we are frieren okay we are schwitzen while es sehr warm ist okay we are schwimmen okay while es Spaß macht while we are weinen means we cry we are weinen we cry while we are sad, traurig na we are sad very sad and then we can't control we start crying okay we are treiben sport okay we are gehen spazieren while we are laufen, we are trinken lustig sind, okay we have some more activities what we can or what we do yes again here while es schädlich ist means yeah it is injurious or yes it damages it harms so maybe dangerous for health or injurious for health yeah it's सर ये थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर दीजिए तो दिख नहीं now it's better हाँ सर okay so while es schädlich ist because it is injurious while wir uns informieren wollen what is the meaning informieren means we want to inform us yeah we need information we want to inform us normal sentence क्या होगा इसका बिना while के because of wollen the verb will come at the end right while we are in Ausland fahren Ausland is foreign country because we are going to a foreign country in a foreign country Ausland is foreign country Videsh what is the meaning while we are Zahnschmerzen haben because of headache, okay while es dunkel ist yes because it is dark while we are Geld verdienen müssen verdienen is to earn because we must earn money, we must earn money while we are uns ärgern because we are angry, we are angry गुस्से में हैं हम लोग while es glatt ist because it is it's flat it's smooth okay while we are Zeit haben because we have time these are the reasons अब मैं इधर से एक बोलूंगा and you try to find out we will fix the region we are arbeiten viel we work a lot while we are Geld verdienen müssen because we have to earn money müssen must we are rutschen aus rutschen while as glatt is yeah Rohit rutschen means it's smooth flat चिकना no ठोकर खाना Entschuldigung rutschen aus rutschen means slip you are right we are rutschen aus
And what is the region? While as dunkel ist. While as black ist. Okay, both the regions make sense because ठोकर खा गए because अंधेरा है. While as dunkel ist, or maybe you just sleep, maybe it is glatt. Okay, yeah. Wir rauchen nicht mehr means we don't smoke. Yeah, we don't smoke anymore. While as Schädlich ist. While as schädlich ist, schädlich. In, okay. While we are Geld sparen müssen because we need to save money. Maybe ये कह रहे हो आप. Yeah, ताकि खर्चा नहीं हो. Maybe this reason. Wir gehen zum Zahnarzt. We are going to dentist. While we are okay. Zahnschmerzen haben. विशाल, we are schimpfen. हम गाली दे देते हैं किसी को. Why? Ärgern. गुस्से में है हम लोग. Maybe we are angry on someone. Yeah. So while wir uns ärgern. Okay. Wir lesen die Zeitung. Mayank, wir lesen die Zeitung. Okay, maybe multiple reason. Yeah. So wir lesen die Zeitung, we read the newspaper. While wir uns informieren wollen, we want to inform us. अब खुद को अपडेट करना चाहते हैं दुनिया में क्या चल रहा है. और मैं भी कोई बोले मेरे को तो टाइम होता है उस दिन पढ़ लेता हूँ. या while we Zeit haben. Okay. Yeah, maybe in particular context you can say this also, no problem. Then wir fahren ins Gebirge. We are going in जो mountains series. While we are so हमको विदेश जाना है इसलिए पहाड़ों में चले जाएंगे क्या? Okay. Okay, while wir Zeit haben, while wir Urlaub haben, that is not here. Yeah. Okay, cool. While wir Zeit haben, okay. Yeah. Or maybe you can give your own reason why we go. Wir beantragen einen Reisepass. Reisepass is passport. Beantragen, what is beantragen? To apply. We apply for a passport. Reason? While we are ins Ausland fahren. Foreign country में जाना है विशाल इसीलिए, right? Okay. Wir bekommen, ja, beantragen. Wir können nicht sehen. We cannot see. Yeah, this may be the reason because it's dark. There is no light in the night. Maybe, yeah. Good. So these are the multiple reasons why we do things. So आपको ये वापस से अपनी कॉपी में लिखना है. You have to write. इस बहाने से आपको कुछ तो vocab learn होगी. ये पर्पज है अपना. But now the reason you already know how we use connectors. This is the simplest way. Simple इसी तरीके से करो. और भी तरीके हैं. But you just practice this first. Be confident. Yes, I will use connector before connector, comma, just after connector, subject and verb at the end. But the verb will be conjugated. Because normal second position पे आती है तो भी verb को conjugate करते हो आप. Suppose there is a modal verb, then modal verb will be here. For example, if I say ich will Geld verdienen. I want to earn money. So there are two verbs. Will, wollen and verdienen. Now which verb will come at the end? Will आएगी. Because the verb you conjugate will come at the end. If you say
एयर, arbeitet, हार्ट. अब तो इसमें तो वर्ब भी एक ही है, सो लास्ट में क्या आएगा? Arbeitet. arbeitet. सिंपल. सो when is when और if and while is because reason के लिए. Then we have gone through this vocab. Some of the words are new. आप शायद A1 में आपने नहीं देखा. What is ausruchen? Now you know, but what is ausruchen? To sleep. Slip ना, पिसल जाना. Okay, ठीक है. Spas, it was already there in A1. Fun. Treiben, To do so. To sport. beschimpfen, To abuse. To abuse. beantragen, reisepass, to apply for. Rauchen, To smoke. fröhlich, Happy. gesund, healthy. Absichtlich, जानबूझ के कुछ करना. absichtlich. आप अब जब अपने डे टू डे लाइफ में सेंटेंस भी बनाओगे, मान लो ग्रुप में, ई लैंग्वेज स्टूडियो में, या आप अपने ग्रुप में, यू शुड यूज दीज वर्ड्स. नए नए वर्ड यूज करते हैं ना, तो यू विल ऑल्सो फील गुड दैट यस आई हैव लर्न समथिंग एंड आई कैन ऑल्सो यूज इट इन सेंटेंस. अपने ग्रुप्स में लगातार जर्मन में ही चैटिंग होती है, आपको पता है. सो यूज दीज वर्ड्स. अदर वर्ड्स आर सिंपल, नो प्रॉब्लम. Now suppose we'll take some new connector. While you know, when you know of false, of false and when, इन तीन को हम लोग कनेक्ट भी कर सकते हैं. When, of, false. यू कैन कनेक्ट दीज थ्री. इनको साथ में कनेक्ट करके हम लोग लर्न कर सकते हैं. वेन एवर यू आर यूजिंग वेन मीन्स 100% श्योरिटी. इफ यू आर यूजिंग ऑब 50% श्योरिटी, एंड इफ यू आर यूजिंग फॉल्स ओनली 2% श्योरिटी, 1 or 2% श्योरिटी. इट मीन्स ऑलमोस्ट नेगेटिव श्योरिटी. अगर कोई बंदा बोलता है, फॉल्स यूज करके बोलता है, आई विल कम, आई मे कम, और फॉल्स अगर उसने यूज कर लिया, इसका ट्रांसलेशन आप करोगे इन केस. इन केस, इन केस ही कम्स मीन्स इट इज ऑलमोस्ट गारंटेड दैट ही इज नॉट गोइंग टू कम. इन केस. हियर वेदर, आई एम नॉट श्योर, बट वेदर, आई एम नॉट श्योर वेदर ही विल कम और नॉट. Means he may come, he may not come. May वाला 50-50, but when he comes, okay, we are waiting for him. When he comes, we'll go to cinema. So that is guaranteed. If the person is coming, आए नहीं तो अलग बात है, but if the person is coming, we'll go to cinema. These are also connectors. It means if you are using when or false, the verb will go at the end. मैं 2-3 तरह के सेंटेंस बनाता हूं so that you understand. आपको ऑफ करके रखना पड़ेगा अपना स्पीकर, ताकि पीछे पो पा हमको सुने नहीं. राइट. मे बी मजा आता है बीच बीच में, बट डिस्टर्बेंस भी होता है. यस. सो बोलते टाइम वापस ऑन करो, नो प्रॉब्लम. बार बार ऑन करो. बार बार ऑन करने में भी आपकी प्रैक्टिस होगी, एक्सरसाइज भी होगी हाथों की. ओके. वी आर गेहन इन स्कीनो, वी आर गेहन इन स्कीनो व्हेन डू कॉम्स्ट. ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस. वी आर गेहन, वी आर गोइंग टू सिनेमा, इसका मतलब अपने आप ये भी निकल जाएगा वी विल गो टू सिनेमा. प्रेजेंट में हम लोग अगर इफ वी नो द कॉन्टेक्स्ट इन जर्मन लैंग्वेज, विद हेल्प ऑफ प्रेजेंट वी कैन ऑल्सो एक्सप्रेस फ्यूचर.
Yes, it's automatically. Wir gehen ins Kino when du kommst. जब तुम आओगे ना, we'll go to cinema. That is guaranteed. Means when means here 100%. ये बात मैंने अपने दोस्त को बोला कि अगर विशाल और रोहित आएंगे तो हम लोग सिनेमा चलेंगे. फिर मेरे को मयंक ने बोला, बट आई एम नॉट श्योर वेदर दे विल कम और नॉट, बिकॉज वो कभी तो आ जाते हैं, कभी नहीं आते. बट जब भी आए हम गए ना. हाँ, जब भी वो आए हम लोग सिनेमा तो गए, बट दे कम ओनली व्हेन दे हैव टाइम. सो आई एम नॉट श्योर. If you are not sure, you will use ob. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht means I don't know. Ob sie kommen. Sie means here they. I don't know whether they are coming. I don't know whether. This means 50-50. Will it rain? I don't know whether it will rain or not. मुझे क्या पता बारिश हो जाए. नहीं, मौसम तो हो रहा है. मौसम तो बहुत बार होता है, कभी आ जाती है कभी नहीं आती. So you are not sure about rain. Ich weiß nicht या फिर ich bin nicht sicher. Sicher means sure. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher ob es regnet. 50-50. So ob. जब भी इधर ob यूज करोगे आप लोग, इफ यू यूज ob इन सेकेंड हाफ, फर्स्ट हाफ में कुछ फिक्स एक्सप्रेशन है वही आते हैं जनरली, वही दिखेंगे आपको ज्यादातर. कौन से? Ich weiß nicht, ich bin nicht sicher, ich möchte wissen. You should also learn them. Ich möchte wissen. Kannst du mir sagen? Kannst du mir sagen? Ich möchte wissen. Weißt du? Weißt du? Means here you don't have information. Even you are not sure about it. So, ich weiß nicht. I don't know. Ob sie kommen, whether they are coming or not. You don't know, but you want to know. तुम जानना चाहते हो ना. Ich weiß nicht. I don't know. But it means indirectly you would like to know. Ich bin nicht sicher. I am not sure whether it is going to rain. It means you want to know कि बारिश होगी कि नहीं. Ich möchte wissen, यहां डायरेक्ट बोला I would like to know. Kannst du mir sagen? Can you please tell me? Kannst du mir sagen means you want to know. Ob sie kommen. Weißt du? Do you know? Ob sie kommen. Ich möchte wissen, ob Radha in die Party kommt. मैं तो पार्टी में जाना ही इसलिए चाहता हूं क्योंकि राधा आएगी. आई वुड लाइक टू मीट हर, बट आई डोंट नो. सो ich möchte wissen ob Radha in the party kommt. Now the verb is coming at the end. Of course, we are learning connectors, so every time you will see verb at the end. कोई भी इनमें से कोई भी कनेक्टर आए, verb will come at the end and comma, then your connector, and just after the connector your subject. Always you will see this. Yup, this one. Every time you should be sure about that. So weißt du? Do you know? We feel their computer costed. Maybe you would like to know. You want to purchase some computer. Weißt du? Okay, W word. We feel, ये अलग से सिखाऊंगा आपको मैं. We feel. Weißt du? इनडायरेक्ट क्वेश्चन सिखाऊंगा. ये ob जो है इनडायरेक्ट क्वेश्चन को भी रिप्रेजेंट करता है, एक्सप्रेस करता है.
वाइश डू, क्योंकि हर बार आप क्वेश्चन ही तो पूछ रहे हो ओब के केस में, ठीक है। ओब के केस में देर इज indirect question, why do we feel their computer cost it? So ob is indirect question, but its connector and verb will come at the end. Okay, false को और लेते हैं। करेक्ट ट्रांसलेशन क्या होगा ऑफ का? ob का मतलब whether, वेदर। whether you know or not, ठीक है। फॉल्स का मतलब है इन केस। इन केस मतलब जैसे आपको मैं बताऊं कि मेरा एक फ्रेंड है, वो मेरे पैसे नहीं दे रहा, आई हैव गिवन हिम आई थिंक बिफोर 3, 4 और 5 years बैक, ही उस टाइम पे उसको बहुत जरूरत थी एंड ही रिक्वेस्टेड दैट आई विल गिव यू विद इन ए मंथ बैक। दैट टाइम बिफोर 5 years I thought okay, because कोई भी बोलता है तो अपन विश्वास करते हैं, we think that सही बोल रहा होगा, and then the reason was also serious. I thought yes, I should help him, because if friend in need is a friend indeed, huh? Then after 1 month he did not give me back. He told me that I'll give you after 2 months, the condition is not good. Then after 2 months I reminded, he said no, I'll give you after 1 year. Then मेरे को डाउट हो गया कि 1 year क्यों मांग रहा है। After 1 year he did not give me, now it is almost 5 years. So now I have the feeling that maybe, but maybe वाली बात भी नहीं रही। In case now if he gives me the money, maybe I can have a party with my friends, right? बाकी फ्रेंड्स के साथ पार्टी करूंगा अगर वो दे दे तो, इन केस, जिसकी पॉसिबिलिटी शायद में भी नहीं बोलना चाहिए, क्या पता आ जाए पैसा, है ना। सो इन केस नेगेटिव श्योरिटी। सो इन केस he gives me money, I will have a party. इश मक है पार्टी, फॉल्स एयर दस गेल्ड शुरुक साल्ट, ऑर्डर गिफ्ट कर दो आप, गिफ्ट, गिफ्ट मीन्स टू गिव, दिस इज माई मनी बट स्टिल आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, और चांसेस आर लेस। इश्मक है पार्टी, आई डू पार्टी, इन केस ही गिव्स मी मनी। नाउ फॉल्स का मतलब देर इज लेस चांसेस, 1 और 2%, क्या पता उसको राम सूझ जाए, उसको लगे कि ये तो धोखा होगा, ये तो गलत होगा, मे बी, एंड देन he'll give money and then I'll have party, I will be very happy, फ्रेंडशिप भी वापस अच्छी होगी। और इश मक है पार्टी, false air thus gave gift. Do you understand the difference when ob and false? Okay, so when ob and false, these are connectors and they talk about the surety, how sure you are about something. When means 100% sure, ob means 50-50 and false means almost negative surety, right? Okay, now we'll make some sentences you can use. अपने सेंटेंस बनाओ। ob इश लर्न हार्ड। अब कुछ लोग कहते हैं सर मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूं, आई वर्क हार्ड, बट आई एम नॉट श्योर whether I can pass B1 or C1 exam. Ich bin nicht sicher. Ich weiß nicht. I don't know. एग्जाम पास करने को बोलते हैं प्रूफुंग बेस्टेहन, दी प्रूफुंग बेस्टेहन, दी प्रूफुंग मीन्स एग्जाम
You can also say das Examen und die Prüfung. But the verb will be bestehen. Bestehen is to pass. So कई लोग बोलते हैं ich weiß nicht ob ich B1 B2 Prüfung bestehe और bestehen kann. उनको अपनी कैपेसिटी में कॉन्फिडेंस नहीं है, मे बी दे से ich weiß nicht. आप इस सेंटेंस को बनाओ, आई डोंट नो, उसके लिए बनाओ, आप तो पास कर लोगे. एयर से बनाना, बोलो आई डोंट नो वेदर ही कैन पास B2. आई डोंट नो. नॉर्मल सेंटेंस क्या होगा? एर कान बेसवाई प्रूफुंग बेस्टेन. पहले नॉर्मल सेंटेंस बनाओ, नॉर्मल बनाओ. ही कैन पास B1 एग्जाम. नॉर्मल सेंटेंस. एयर पहले नॉर्मल. एर कान बेसवाई प्रूफुंग. So the original verb will come with modal. Er kann B2 Prüfung bestehen means he can pass B2 exam. But suppose you are also doubtful about him, then what will you say? Ich weiß es nicht, ob B2 bestehen kann. Kann will come at the end. Yes. Ich weiß nicht ob B2 Prüfung bestehen kann. Okay? मैं क्या बोलता हूं? मैं बोलता हूं if you work hard you will pass B2 exam. If you work hard. If मतलब when you will or he can pass the exam if he or she works hard. So first sentence same हो जाएगा. Er kann B2 Prüfung bestehen, wenn er hart arbeitet. क्या होगा? When er hart arbeitet. When er hart arbeitet. अगर बंदा मेहनत करेगा, कड़ी मेहनत करेगा तो B2 एग्जाम पास होगा. सिंपल में तो नहीं होगा, ऑफ कोर्स यू हैव टू वर्क हार्ड, राइट? यू हैव टू प्रैक्टिस. सो आई से er kann B2 Prüfung bestehen wenn er hart arbeitet. और फिर वो क्या कहता है? सर मैं B2 पास कर लूंगा ना, इन केस, वो श्योर नहीं है, इन केस आई पास B2 एग्जाम आई विल गिव यू a party. So I will give you a party if I pass B2 exam. If means in case, we will use in case because he said. So first sentence, we will have a party. Ich will Ihnen eine Party geben. Okay, yeah. Falls ich B2 Prüfung bestehen kann. कान बोल रहे हैं तो बेस्टेहन कान होगा, लेकिन फाल्स इश B2 Prüfung bestehe इन केस आई पास द एग्जाम. ओके, कान की जरूरत नहीं है, राइट? सो व्हेन ob एंड फाल्स आर दे नाउ क्लियर? ऐसे लग रहा है ना क्लियर है? बट यू विल मेक सेंटेंसेस देन ओनली. ओके, false na, we have done now false, ob, when and while. I think इसमें आपको एग्जाम्पल भी खूब मिले हैं and you can easily you can understand that. But
you have to make some 10 sentences each. In the group you have to send sentences using ob, false, when and while. मैं जानबूझ के धीरे धीरे ये चीज कर रहा हूं, आप ये मत समझना कि और कराओ. आई विल डू एवरीथिंग, बट इनकी प्रैक्टिस बनती है पहले. मैंने आपको पहले दिन भी बोला था, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए. मतलब आप 100 चीजें करने की कोशिश करो और एक को ढंग से नहीं करो, देन यू विल नॉट बी कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंट तभी होगे, एग्जाम A1 हो, B1 हो, C1 हो, इफ यू नो द कॉन्सेप्ट एंड देन यू कैन मेक सेंटेंसेस. प्रैक्टिस करनी है उसकी. 10 सेंटेंस आप नहीं बनाते हो तो समझ लो तुमको समझ में नहीं आया है. भले ही मन में आप मोतीराम बन जाओ, बट बात बनेगी नहीं. सो यू